Am I audible? Online students? Online students, am I audible? Okay, so we'll start. Okay. I think screen is not visible to you. Okay, it is visible now. Not visible yet. स्क्रीन यांना दिसत नाही आहे, कसं करता येईल? मला वाटतं इथे आहे ना OBS मध्ये हे आहे ना deactivate activate. Okay. Okay. Sorry. Yeah, visible. Okay. Chalo, start. So before going to this topic, profits and gains of business or profession, I forgot to tell you one thing, which is there in income from house property. Okay. So there I told you two limits, that is a 30,000 and 2 lakh. Okay. So keep in mind this 30,000, that is applicable to the loan taken before year 1999. Okay. And this 2 lakh, that is the limit for loan taken after year 1999. So this is for loan before year 1999. ये याद रहेगा, this limit 30,000 था पहले, and that limit is increased to 2 lakh. Okay. So that was missed in my lecture, so I covered that. Now let's start with a new topic, that is the profits and gains of business or profession. Okay. So you know that profit and gains of business means any business, any kind of business, either trading business, okay, or any commerce, manufacture, services, adventure, concern, okay, trade, commerce or manufacture. Okay. So business includes any trade, commerce or manufacture, or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture. Okay. So generally business means recurring economic activity. Okay. But for income tax purpose, an isolated activity may be termed as a business depending upon facts and circumstances. So following elements shall be considered to judge a transaction as business transaction: nature of commodity, intention of the party, efforts applied in transaction, periodicity of transaction and nature of transaction, whether incidental to business or not. Thank you. Then there is one term called profession. So I am a professional, means I am in profession of cost accounting, okay, chartered engineer, valuer, okay. So this profession includes vocation, okay. What is the meaning of vocational? Vocational courses. You might have heard this name, na, vocational courses. And we ask them, what is your trade for vocational courses? Skills. It is a skills. Okay. So पहले कैसा था, पहले के जमाने में ऐसा बोला जाता था, skills, that is the by birth. Skills are always there by birth. ऐसा नहीं है. Okay. So skills can be imbibed. Okay. Skills can be imbibed. Skills can be imbibed. Okay. So जैसा after 10th, okay, you might have heard about ITI. ITI, what is that? कौन सा गवर्नमेंट ये करता है ITI? Which government governs ITI? Industrial Training Institutes. Industrial Training Institutes. Okay. And which government? Yes, state government. Okay. ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में ITI है. Everywhere you will find a ITIs, and that is governed by the state government. Okay.
And what is the aim? What is the purpose of having ITIs? Skill, yes, skill development. Okay, तो वहाँ पे जाके आप courses भी check करोगे ना, you will find a courses of electrician, okay, then courses of plumbing, plumber. तो जितने भी skills लगते हैं, तो that is set over there, okay. उनको सिखाए जाते हैं ये skills, यानी उनको दिए जाते हैं ये imparting the training of certain skills, okay. So that is called a occasion. So profession includes occasion, okay. So this is also our skill. जैसे हम बोलते हैं ना CA, chartered accountant, cost accountant. So what is their skill? Financial analysis. That is their skill, okay, and that's why they are professional, okay. So profession requires purely intellectual skill or manual skill on the basis of some special learning and qualifications gathered through past training or experience. So chartered accountant, doctor, lawyer, etc. Professional skill can be acquired only after patient study in a particular system, either in college, university or institute, and application. Application, that is the experience. Application means experience, okay. So अभी आप जो सीख रहे हो that is a theory. Whenever you will start putting it into practice, okay, so that experience will build up. और जितना ज़्यादा experience उतना ज़्यादा उसका value, okay. So remember, for profit and gains of business, okay, or profession, so motive is the profit, earning profit out of that, okay, out of any trade, out of any commerce, okay, out of any manufacturer, okay. So your motive, first motive is what? Profit motive, okay. So if motive of the activity is pleasure only, it shall not be treated as business activity. It shall not be treated as business activity, okay. So if you have a art of singing, okay, but you are not taking any honorarium, you are not accepting, okay, just for the fun and frolic you are singing in front of people, okay. So usko hum business बोलेंगे नहीं. Why? Because business का definition ही ये है, okay, कि there should be a profit motive. There should be a profit motive, okay. Business versus profession. So how you will differentiate? So what is business? What is profession? Anyone? Correct. Manufacturing or trade, okay, commerce, okay, and profession. Here you are using your skills for the profit, for the earning profit, clear? So that is the difference. So an income arising out of trade, commerce, manufacture, profession or vocation shall have the same treatment in Income Tax Act. However, a little segregation is required to be made between business and profession while applying it, okay. So section कौन सा है ये? 44AA, 44AB, 40AD, 44ADA, etc. We will discuss one by one, okay, all these sections, okay. So income chargeable under the head profit and gains of business or profession, that is section 28, that is the section 28, okay. So section 28 enlists the income which are taxable under the head profit and gains of business or profession, okay. So section 28(1), any income from business or profession including income from speculative transaction shall also be taxable under this head. Now I'll ask you, what is the meaning of speculative transactions? Correct. Okay. So like certain forecasting, है ना? So that is a speculative. That is based on certain predictions, informations, okay, about the future, okay. So entire share market, it operates, it's termed as a speculative business, okay. It operates on speculation. कैसे speculation? जैसे ईरान वॉर
चालू हो गया. ओके, या सबसे स्टार्ट बिफोर ईरान. ओके, दैट वेनेजुएला प्रेसिडेंट, सो ही वॉज कैप्चर्ड. ओके, बाय अमेरिकन गवर्नमेंट. ओके, अभी उससे क्या रिलेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर बढ़ने के लिए? एनीवन? अमेरिका में. और हाँ, देखो कैसा होता है, वेनेजुएला में जो क्रूड मिलता है, ओके, सो वो क्रूड को आपको रिफाइन करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल ऑब्टेन ऑल पेट्रोल, डीजल, नाफ्ता, जो भी हमारे प्रोडक्ट है. ओके, एलपीजी गैस एंड ऑल. सो ये इसको प्रोसेस करने का, यानी जो ग्रेड क्रूड उधर मिलता है, वो ग्रेड को प्रोसेस करने वाली रिफाइनरी एक ही दो लोगों के पास है. एक है चाइना एंड अनदर इज रिलायंस. ओके, बस वो उधर कैप्चर हो गया एंड नाउ दैट ऑयल रिजर्व्स, सो दैट इज ओन बाय अमेरिकन. ओके, ऐसा जब इन हो गया, so that day onwards prices of Reliance Industries shoot up. So this is called speculative. ऑर्डर मिला क्या? पता नहीं. मिलने वाला है क्या? पता नहीं. हो सकता है, मिल सकता है. हो सकता है पूरा 100% ऑर्डर चाइना को चला जाए, मे बी. करेक्ट. तो सिनेरियो बेस्ड जो रहते हैं, स्पेक्युलेटिव बेस्ड, क्या ऐसा होएगा ओके आगे चल के कि इनको ऑर्डर मिलेगा तो इनका शेयर बढ़ेगा, इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेगा. या प्लीज. हेलो. करेक्ट, प्राइस में भी चेंज इन फ्यूचर, सो दैट इज कॉल्ड स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस. दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर दिस हेड, विच हेड? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन. ओके, then income of trade or professional association. So income derived by trade, professional or similar association from rendering specific services to its members shall be taxable under this head. Okay, then export incentives. An export incentive in the form of profit on sale of import license or duty entitlement passbook, cash assistance receivable by an exporter under a scheme of a government of India, duty drawback received or receivable for export, duty drawback, etc. So that is a export incentive that will also be taxable over here. Okay, perquisite from business or profession. Okay, then remuneration to partner. Okay, so any interest, salary, bonus, commission or remuneration received by a partner from the firm, okay, shall be taxable as business income in the hands of the partner to the extent allowed in the hands of a firm. Okay, then amount received or receivable for certain agreement, any sum whether received or receivable in cash or in kind under the agreement for not carrying out any activity in relation to any business or profession. Okay, any case for this? Amount received or receivable for certain agreement, like not carrying out any activity in relation to any business or profession. So that is also a profit or gain on a business. कुछ नहीं करने का, that is also a business. So any example for this? बोलो. Okay, good one. Okay, so any sum received against that agreement, that will also be treated as profit and gains from business. Okay, so not doing any business is also business. Clear? Okay, so not sharing any know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee or any other business or commercial rights of similar nature or information or technique likely to assist in the manufacture or processing of goods or provision. Okay. Then Keyman insurance policy also. Some received under Keyman insurance policy. Okay. Keyman insurance policy, who takes? Organizations for their Keyman. Okay. Like CFO, CEO. Okay. So
the sum is received by that person. So where it will be taxable? It will be taxable under Keyman insurance policy. Okay. Now general points, chargeability. So as under section 145(1), income chargeable under the head of profits and gains of business or profession or income from any other sources shall be subject to provision of section 145(2) is to be computed in accordance with the method of accounting either on cash or on accrual basis, regularly followed by the assessee. However, there are certain expenditures specified under section 43B which shall be deductible only on cash basis. Okay. ओके अभी आपने मैंने आपको स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन बताए थे. ओके तो उसमें से स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस ओके means is transaction in which contract for purchase and sale of any commodity including stock or shares is periodically or ultimately settled otherwise than by the actual delivery of transfer of the commodity or script. Okay, so that is also a speculative transaction. So आपको पता होगा डेरिवेटिव मार्केट. डू यू नो डेरिवेटिव मार्केट क्या करते हो आप उस पे? देर आर टू ऑप्शंस, पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शंस, है ना. तो आपको अगर बढ़ना, आप अगर बोलते कि स्पेक्यूलेटिवली ये शेयर बढ़ेगा तो यू गो फॉर ए पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन. पुट, वेरी गुड. बढ़ेगा तो पुट. ओके बढ़ेगा तो कॉल है क्या? गिरेगा तो पुट है क्या? Okay, I have to recheck. I don't know, but there are put and call options. बढ़ेगा और घटेगा तो. Okay. हाँ. हाँ नहीं I am talking about the not a delivery market. Not actual delivery of shares, I am talking about the speculative market, like a derivative. So derivative में there are two options, either you can put or you can call. Okay, तो put जो है वो बढ़ता है तभी put लगाते हैं हम. Okay, put options बोले तो ये शेयर बढ़ेगा. Okay, and इसका oh sorry, so his point is valid. Okay, put बोले तो down जाएगा and call बोले तो बाय. ओके ऊपर आएगा. ओके तो दिस नेचर ऑफ ट्रेड दैट इज जनरली ट्रेडेड ऑफ. ये जो आपने जो ऑप्शंस लगाएगा पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस, सो दैट गेट्स ट्रेडेड ऑफ ऑन 20th ऑफ द मंथ. 28 तारीख को खत्म हो जाता है. ओके और जितना भी पैसा आपने लगाया अगर आपने बेचा नहीं हो यानी वो कॉन्ट्रैक्ट क्लियर किया नहीं है, दैट विल गेट क्लियर, वाइप्ड आउट. Okay, so very risky business. Yeah. अच्छा वीकली चल रहा है, वीकली सेटल ऑफ होता है. ओ दैट आई डिड नॉट नो. ओके बिकॉज बीइंग स्पेक्युलेटिव नेचर मैं पहले बहुत किया इसको. 2006 और 8 में जो रिसेशन आया तब से आई केम आउट और मैं कभी अभी देखता भी नहीं है. दैट्स वाई मैं भूल भी गया पुट कौन सा है कॉल कौन सा है, जैसा आज हुआ है मेरे साथ. ओके सो दैट इज थिंग. So transaction not deemed to be speculative transactions, वो भी है. That is one is the hedging contract. Do you understand hedging? Hedging क्या होता है? What is that? हाँ 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 ओके हाँ ओके
त्यावेळचा that is hedging. Okay, okay, good. So contracts in respect of raw material or merchandise, okay, so entered into by a person in the course of his manufacturing or marketing business to guard against the loss. So basically hedging is the guarding against the loss, guarding against the loss. Okay, तो आज भी अगर समझो कुछ डॉलर्स है, ओके, तो डॉलर का रेट जनरली बढ़ता है कम होता है, एक्सचेंज रेट, वी कॉल इट एज अ एक्सचेंज रेट. ओके, तो हम लोग क्या करते थे, एलसी दैट इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट. हमको कुछ इंपोर्ट करना है, अगर तो इंपोर्ट करना है तो नॉर्मली शिप विल रीच आफ्टर 2 months. ओके, तभी डॉलर का जो रेट है वो चढ़ा उतार होएगा. ओके, तो इफ we had a good rate at the time of before 2 months, at the time of placing LC, letter of credit, to the another foreign party, क्योंकि फॉरेन से मटेरियल आने वाला है तो फॉरेन पार्टी को मेरे को एलसी देनी पड़ेगी, लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, तो समझो एक आधा चीज मैं खरीद रहा हूँ, ओके, लेट्स से फॉर $15,000 US डॉलर, तो मैं उसको हेजिंग करके रखता था. ओके, एट गुड रेट आई यूज्ड टू हेज इट. Okay, so that is the guarding against the any loss, guarding against the any loss. Okay, through future price fluctuation in respect of this contract for actual delivery. Okay, then again contract in respect of stocks and shares entered into by a dealer or investor in stocks and shares to guard against the loss in his holding through price fluctuation. Okay, then contracts entered into by members or forward market and stock exchange in the course of any transaction in the nature of jobbing or arbitrate to guard against the losses. Okay, आजकल मैं देखता हूँ ना नेट पे, तो whenever I go for a air ticket booking, okay, तो समझो अभी मुझे अगर बाली जाना है, okay, so that rate अभी समझो चल रहा है कि 26,000 or 30,000. Okay, so there is one column comes over there, you can guard it, means you can hedge it. वो जो अमाउंट है, वो जो रेट है आज का, ओके, तो एक कुछ सम अमाउंट पे करके 2,000 3,000 मैं उसको गार्ड करके रख सकता हूँ. वो टिकट का रेट, टिकट के रेट पता है आपको, एयर टिकट का जैसे जैसा उनका डिमांड बढ़ते जाता है तो दे दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग. ओके, जब उनको लगता है कि यार अभी कोई जाने वाला ही नहीं है और सीट पूरा यानी ये प्लेन ये जाएगा, खाली जाएगा, तो एज ए टाइम दे रिड्यूस द प्राइसेस ऑन नेट. ओके, सो इंटरनेट हैज बिकम अ गुड मीडिया फॉर हेजिंग ऑल्सो नाउअडेज. ओके, then derivative trading, which we had just discussed. Okay, derivative trading, put option, call options. Then negative income, income includes negative income, that is a loss. Okay, notional profit, a person cannot do business with himself, hence notional profit is not taxable. Always remember, notional profit is not taxable. Do you understand notional profit क्या होता है? 1 minute, I'll just take this. हॅलो, मी एका लेक्चरमध्ये आहे, तर मी तुम्हाला नंतर कॉन्टॅक्ट करेल 9 वाजता आज. अरे नाही देऊ शकत, थांबा. कसला OTP आहे? हॅलो, 9598 हाच का? इनकम हाँ, नोशनल प्रॉफिट, एनीवन? नोशनल प्रॉफिट क्या है? Not actual profit, very good, not actual profit, not realizable profit, realized. Okay, the profit which is realized. Okay, that is not the thing. Okay, so a person cannot do business with himself and notional profit is not taxable. Example, if proprietor withdraws goods costing ₹10,000 for a personal use at an agreed value of ₹12,000, then profit of ₹2,000 shall not be taxable. Okay,
Now, which are the income not taxable under the head profit and gains of business or profession? Okay, number one, rent from residential house property, because that is the income from house property. Then dividend on shares, that is a other income. Okay, other sources, income from other sources. Then winning from lotteries, rates, races, etc. That is also income from other sources. Okay. Yeah. क्यों? Very good question. हाँ हाँ करेक्ट, बिजनेस का प्रॉफिट है. एक ही मिनट, हाँ, इसको एक OTP भी दे देता. हाँ बोलो. डिविडेंड इनकम, या गुड थिंग यू आस्क्ड. उसको इधर क्यों नहीं दिखाया जाता है? व्हाई इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस? एनीवन? किसी को कुछ इस पे जवाब देना है? या लेट मी टेल यू, ये ठीक बोल रहा है. ओके, इसका ही पॉइंट मैं एक्सटेंड करता हूँ. डिविडेंड, ओके, that is as good as returns on your investment. Doing investment is not a business. Okay, it is not any trade, it is not any commerce. Okay, you are doing a investment. कैसे बताता हूँ? FD पे तुमको इंटरेस्ट मिलता है, that is investment. Okay, वो कहाँ दिखाते हो आप? Income from other sources. Similarly, dividend is also the profit. Okay, profit you realize out of your investment. जो investment है कैसे हुआ है? Investment. Okay, अभी it is as good as a interest on your investment. Okay, but they are sharing the profit, and that's why कौन सा? Other business is sharing your profit. Okay, sharing their profit to you. Why? Because you invested in their business. Okay, so that is the thing. नहीं, इन्वेस्टमेंट करते वो प्रॉफिट नहीं है. जो हम देखो, देयर आर टू थिंग्स. ओके, इन्वेस्टमेंट कम्स ऑन द बैलेंस शीट्स. ओके, और तुम्हारा बिजनेस इनकम निकलता है P&L से. ओके, सो व्हाट यू डू, यू सोर्स द मटेरियल, you buy the material, raw material, and then you do the value additions. Okay, so you generate certain expenses and you add your risks. Okay, you add your profit and you sell it to the market, in the market as a finished good. That is called the business. Okay, it's not an investment. Okay, investment जो है ना, that is reflected on a balance sheet. क्लियर? सो तुम्हारा डिविडेंड इनकम भी है ना, हम किधर पकड़ते हैं? यस, नहीं आना चाहिए. तुम्हारे हिसाब से नहीं होता है, ये जो उधर लिखा है उसके हिसाब से. यस, हाँ. It is not earned by doing business or working. It is not earned by doing business or working. Okay, correct? Thank you. Very good. Chalo, expenditure allowed as deduction. Okay, so what are the expenditures? So you understand capital expenditures and revenue expenditure. So all revenue expenditure, that is allowed. So capital expenditures are not allowed as deduction unless and until expressly allowed, whereas revenue expenditure are allowed as deduction until and unless expressly disallowed under the Income Tax Act. Okay, so simple एकदम. आपका P&L बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और उसमें जो इनकम जनरेट हो जाएगा तो उस पर टैक्स भरो. सिंपल. ओके, expenditure of non-assessable business. Okay,
any expenditure of non-assessable business is not allowed as deduction. For instance, expenditure for earning agriculture income is not allowed as deduction from income of an assessable business. Okay. Why? Because agriculture is not as non-assessable. Okay, तो उसके expenses आप नहीं ले सकते हो इधर. Expenditure must relate to the business of the assessee. So expenditure must have been incurred by the assessee for its businesses. Okay. Then anticipated loss or expenditure subject to certain exception. No deduction are allowed for anticipated loss. Okay. Subject to certain exception. Exception कौन कौन से? This is the exception. Provision for bad and doubtful debts. Okay. Then notional expenditure. No one can earn income from himself or herself. So for instance, rent paid to a sole proprietor, salary to proprietor, interest on capital to proprietor, etc. are not income in the hands of proprietor. Hence it is not deductible from the income of a business as expenditure. Okay, these are the all disallowed expenses. Disallowed. Okay. What about depreciation? Depreciation. Is that expenses? Yes, it is expenses. है ना? Whether it is allowed or not. Allowed है ना? Yes, it is allowed. It is allowed. Okay. What is depreciation? It is revenue expenditure or capital expenditure? Revenue expenditure. Why? Yuga Devi, she answered, okay, from there is a capital expenditure. She is saying capital expenditure and you are saying revenue expenditure. Exactly क्या है? आप तो करके आ गया ना इधर से. Nikhil, he was there in foundation, so that time I taught him revenue expenditure, capital expenditure. क्या है ये? क्या भूल गए क्या? Notional expenditure. हाँ. उसी ईयर का हम पार्ट लेते इसलिए. हाँ. अच्छा, so whatever expenditure comes falls in that particular year, so that becomes a revenue expenditure. ये कौन सा definition बना दिया यार? ये तो बढ़िया डेफिनेशन लगा दिया ऐसे. क्योंकि वो साल में ही आ रहा है इसलिए वो रेवेन्यू बन गया. अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है. हाँ? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा आपके ऊपर. हाँ हाँ, सिंपल है, एकदम सिंपल चीज़ है, बताता हूँ आपको. सो जो भी आपके इधर आते हैं ना P&L में. ओके, सो दैट इज ऑल रेवेन्यू. दैट इज ऑल रेवेन्यू. ओके, एक्सेप्ट डिप्रिसिएशन. व्हाई? बिकॉज दैट इज अ नोशनल एक्सपेंसेस. दैट इज अ नोशनल एक्सपेंसेस. ओके, वो है नहीं, एक्चुअल नहीं है. नॉन कैश बोलते हैं हम उसको, नॉन कैश एक्सपेंसेस. ओके, इट इज अलाउड इन अ सेपरेट सेक्शन. ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको एक प्रोविजन है. ओके, तो पहले हम कंसिडर करते हैं उसको, ऐड बैक करते हैं और फिर से उसको निकाल देते हैं अंडर सेक्शन. ओके, सो दैट विल कम ओवर हियर एंड दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू कि क्या है वो. तो जब भी आप कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम बनाते हो ना कोई प्रोप्राइटर का, सो दैट टाइम यू फर्स्ट उसको हाँ और फिर ऐसा. ठीक है, क्लियर आएगा वो चीज़ भी आएगी. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू. ओके, स्पेसिफिक डिडक्शन वो आएगी अभी. सो विल जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes एंड फिर से स्टार्ट करते हैं. तो अभी कितना बजा है? अभी है 7:26. सो 7:32 को वापस 7:32.
Okay, online guys, we are starting again. Okay, so I am going to discuss the depreciation thing. Okay, method of depreciation and all. Okay, so this section is 32. This section is 32. So section 32 provides for a depreciation. Okay, so you know that there are tangible assets and intangible assets, right? Tangible assets means what? Very good. That can be visible. That should be. You can touch it. Okay, you can. Okay, and what are intangible? Cannot be seen. Okay, right? Cannot be seen. और क्या? कौन कौन से टाइप्स? इंटेंजिबल में सबसे बड़ा कौन है? गुडविल. ओके, गुडविल. देन कॉपीराइट, पेटेंट्स. ओके, फ्रैंचाइजी. ओके, बिजनेस राइट्स. ओके, देन टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग. देन प्लांट एंड मशीनरी. ओके, furniture and fixtures, tool and tackles. So all these are intangible assets. Now whatever physical wear and tear, it happens. Okay, जैसा आशीष देशमुख है. Okay, तो जब वो यंग था, so that time he was very energetic. Okay, अभी once he crossed 50 years. Okay, so depreciation plays a vital role on everything, on life of on our life, human life also, as well as जितने भी कुछ चीज़ें हैं, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, उस पर वो प्ले करता है. वियर एंड टियर, दैट इज कॉल्ड फिजिकल वियर एंड टियर. सो यू हैव टू प्रोवाइड फॉर दैट फिजिकल वियर एंड टियर. जो भी यूज हो रहा है एसेट्स. ओके, क्या यूज हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग. ओके, बिल्डिंग इज बीइंग यूज्ड. ओके, जैसा ये केस में, जैसा हम इधर एजुकेशन दे रहे हैं, that is also a trade. Okay, that is also a commerce. तुमसे फी आती है, हम आपको पढ़ाते हैं. But what asset we are using? Building we are using, and building is getting depreciated. Okay, हर साल बारिश आ रही है, हर साल समर. अरे क्या समर है यार, आजकल तो जाना मुश्किल हो गया बाहर, इतना समर खतरनाक. ओके, तो ये दिस ऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इट plays a vital role in depreciation, in wear and tear, physical wear and tear. Okay, so that's why you have to provide it for it. It's not a cash expenses. It's not a cash expenses. आपने कहीं पैसा दिया नहीं है. It's a provision for the future expenses. It's a provision for future expenses. Notional. It is a notional expenses. Is that clear to you? So, बोलो. हाँ, जमीन इज ऑल्सो एसेट. लेकिन जमीन का देर इज नो डिप्रिशिएशन. देर इज नो डिप्रिशिएशन ऑन जमीन. ओके, यू मस्ट बी नोइंग, हमारा जो हिंदू संस्कृति है उसमें 5 पंच महाभूत है. कौन कौन से? इनको कोई डिप्रिशिएशन नहीं. पंच महाभूत को कोई डिप्रिशिएशन नहीं. उसमें एक है आप बोले तो जमीन. ओके, ठीक है, चलो. सो टेंजिबल एसेट पे डिप्रिशिएशन था. टेंजिबल एसेट पे डिप्रिशिएशन होता है. ओके, इंटेंजिबल एसेट पे होता है क्या? इट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन. इट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन. ओके, दैट डिप्रिशिएशन इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन. ओके, then conditions for claiming depreciation. So depreciation is allowed provided the following conditions are satisfied. Number 1 condition, asset must be owned by the assessee. Asset must be owned by the assessee. Condition 2, asset must be used for the purpose of business or profession during the previous year. ये जो आपका फंडा है ना, प्रीवियस ईयर में वो यूज किया गया है. ओके, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव अ डिप्रिशिएशन. ओके, so this is a condition 2, asset must be used for the purpose of business or profession during the year. Okay, अभी
there are two acts which governs the depreciation. Okay, one is Company Act and one is Income Tax Act. Okay, अभी इनकम टैक्स एक्ट ने क्या किया है कि डिप्रिशिएशन के लिए जितने भी टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल, ओके, तो उसके 13 ब्लॉक बना दिए. व्हाई? फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, बिकॉज ही हैज टू फाइंड आउट योर इनकम. बिजनेस का इनकम निकालना है और वो इनकम को चार्ज करने टैक्स विल बी द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. ओके, तो इनकम टैक्स एक्ट ने क्या किया है कि दे segregated entire assets, tangible assets as well as intangible asset into 13 blocks. 13 block है उनके. Okay, so that block, and according to block they have defined the rate of depreciation. Simple, एकदम simple. ठीक है. अभी ब्लॉक कहाँ से चालू होते हैं? So पहला ब्लॉक है बिल्डिंग. नंबर 1 बिल्डिंग. ओके, सो इट सेज दैट 5% रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज द 5%. ओके, इसमें कौन से बिल्डिंग है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग अदर देन होटल्स एंड बोर्डिंग. होटल्स एंड बोर्डिंग निकाल दिया बाहर. ओके, ऑल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स. ओके, सो प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन क्या है? तो कॉस्ट अकाउंटेंट. ओके, सो माय ऑफिस, so there is a building. Okay, so I can charge 5% depreciation. Clear? Okay, so another building is that non-residential building. I can do business in a residential place. Okay, lawyer, any lawyer or doctor, they can do their business, their profession they can carry out in any type of building. So if it is residential, 5%. Okay, so अनदर थिंग, सेकंड बिल्डिंग जो है उसमें 10%. अभी 10% में कौन कौन सा है? नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, गोडाउन, ऑफिस, फैक्ट्री एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग होटल्स एंड बोर्डिंग. क्लियर? सो वहां पे कितना रेट है? 10%. ओके, तो आप अगर कंपनी में काम करते हो एंड इफ दैट ऑफिस और दैट फैक्ट्री बिल्डिंग, तो तुम कितना चार्ज करोगे उसको? 10%. वेरी गुड. ठीक है, लेकिन मैं मेरे प्रोफेशन में आई एम यूजिंग रेसिडेंशियल ऑफिस, सो आई विल चार्ज 5%. क्लियर? थर्ड, तीसरा ब्लॉक है बिल्डिंग टेम्पररी कंस्ट्रक्शन. अभी क्या होता है? टेम्पररी कंस्ट्रक्शन, माय कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन इन निगड़ी प्राधिकरण. सो व्हाट वी डू, जो लेबर लोग रहते हैं ना, उनके लिए कुछ ऐसे हटमंड बना देते हैं, हटमेंट्स. ओके, जहाँ बड़ा बिल्डिंग बनना होता है ना, फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए नॉर्मली दे गो फॉर अ हटमेंट्स. ओके, टेम्पररी बिल्डिंग रहे, शेड बना देते हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं, दिन भर काम करेंगे, रात को आके चूल्हा वगैरह जलाएंगे उनके हटमेंट में. सो दैट इज कॉल्ड टेम्पररी कंस्ट्रक्शन, और उसके लिए सीधा चार्ज है 40%. वाई? बिकॉज 2-2.5 साल में, 3 साल में तुम्हारी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, तो जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहे हैं वो तो 3 साल में खत्म होने वाले हैं. ओके, so that's why rate of depreciation is 40%. क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, correct. So that will also come under this temporary construction. Correct? चलो, third, fourth अभी furniture. Furniture, that is 10%. So any furniture including electrical fittings. Electrical fittings is also included over. So group name is a furniture and fittings. Clear? Okay, तो यहाँ का जितना भी तो आपको दिख रहा है ना, ये सारा, ये चीज़ आप जहाँ बैठे हैं, ओके, ये सारे चेयर्स, ये टेबल, ये डायस, ऑल थिंग्स. सो कितना रहेगा? 10% डिप्रिशिएशन. यस यस यस, ऑल इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स. ओके, ऑल योर ऑफिस इक्विपमेंट ऑल्सो. ओके, then comes the fifth one, plant and machinery. तो plant and machinery में 20% is given to the ocean going ships, vessels, speed boat, etc. Okay, so all in general plant and machinery का जो चार्ज है that is 15%. Okay, आप भी कोई फाइनेंशियल्स देखते होगे तो उसमें फिक्स एसेट शेड्यूल रहता है,
डिप्रिशिएशन आप चेक करो तो प्लांट एंड मशीनरी पे सीधा आप क्या करते हो 15% लगा देते, बट इन केस ऑफ ओशन गोइंग शिप्स वेसल स्पीड बोट इट इज 20%. नाउ माई क्वेश्चन इज दैट व्हाई इट इज मोर? ओशन गोइंग शिप में क्यों ज्यादा है? एनीवन आंसर? क्यों? पानी में तो ज़्यादा ये फ्रिक्शन नहीं रहता ना, तो ज़्यादा दिन चलेगा ऐसी चीज़ से. खारे पानी, यस ही यूज द राइट वर्ड. खारे पानी में क्या रहता है? करोडिंग प्रॉपर्टी रहती है, तो उसको मेटल का बना हुआ रहता है शिप, ओके, तो इसको जल्दी से खराब कर देगा. खारे पानी से जितनी भी हवा चलती है ना, वो जितना भी तुम सी बीच के पास रहो और देखो क्या होता है, आपकी गाड़ियाँ वगैरह है ना, सब 1-2 साल में खराब, खत्म. ओके, सो बॉम्बे में जितना भी लोग रहते हैं, मुंबई छोड़ के पुणे में क्यों आ जाते हैं? बोले हमको ज़्यादा जीना है यार. ओके, ज़्यादा जीना है. ओके, सो दैट्स वाई हियर 20% इज गिवन. देन प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार इंक्लूडिंग लॉरीज एंड बसेस, वो तुम्हारे जो है ना पीएमटी, पीसीएमसी, ऑल दोज बसेस, लॉरीज, ओके, यूज फॉर हायरिंग पर्पजेस, सो दैट इज अ 30%. ओके, तो जितना भी ओला वगैरह उसका जो भी कार रहेगा कमर्शियल बेसिकली बहुत ज़्यादा चलेगी आपकी. ओके, और जो तुम्हारा कमर्शियल नहीं है उसको कितना लगाओगे? है नहीं, समझो अब कार है, एक आधा गाड़ी है तुम यूज कर रहे कंपनी में, ओके, तो उसको कितना लगाओगे? नॉट लॉरी, नॉट लॉरी, नॉट बस, एक कार है आने जाने के, 15%. 15%. So it's a part of general plant and machinery. Vehicles are the part of general plant and machinery. But in case of lorries and buses, it is considered as a 30%. Okay. Then comes the computer, including computer software, printers, okay, books owned by professionals. So here rate is 40%. अभी आजकल कोई बुक यूज नहीं करते. पहले के ज़माने में क्या होता था? कंप्यूटर्स वेयर नॉट देयर, सो पीपल दे, आप किसी का भी पुराने मूवीज़ में देखोगे ना, तो उसका ऑफिस देखोगे तो बड़े बड़े उसके पीछे बुक्स, लॉयर है तो क्या बुक्स लगाए हुए. ओके, तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है बुक्स. ओके, सीधा आपको जिधर भी आप अटकते हो तो आप डाल देते हो वेदर डिप्रिसिएशन इज रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, करेक्ट. ओके, so that depreciation has gone to computers 40%. okay, और ये चीज़ ऐसी है कि life is less 5 years normally, so that's why it is allowed 40% depreciation. okay, then comes the air or water pollution control equipment, and here rate is 40%. now my question is why 40%? इतना ज़्यादा क्यों? ये थोड़ी खराब हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है खराब, तो क्यों इतना ज़्यादा? बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट दिस बिजनेसेस जहाँ पे पोल्यूशन कम हो जाए, और जो भी पोल्यूशन कम करने के लिए हेल्प करे, ऐसे जो चीज़ें बनती है उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ गिवन 40%. ओके, एयर और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%. ओके, सो इन केस ऑफ जैसे कोई घर में या फैक्ट्री पे आप सोलार लगा दो, ओके, उसको 80% है, 80% डिप्रिशिएशन. इन फर्स्ट ईयर योर कॉस्ट कैन बी कवर्ड, इट कैन बी कवर्ड. ओके, उतना तुम्हारा प्रॉफिट कम रहेगा, उतना तुमको गवर्नमेंट को कम देना पड़ेगा. सो गवर्नमेंट इज अलाउइंग यू, यार ले ले. ओके, व्हाई? बिकॉज यू आर प्रोमोटिंग नॉन रिवर्सिबल एनर्जी जो है. ओके, रिवर्सिबल एनर्जी जो है उसको आप प्रमोट कर रहे हैं. ओके, सो यू आर सेविंग आवर कोल्स, यू आर सेविंग आवर फ्यूल्स, पेट्रोल डीजल, इसको सेव हो रहा है मेरा. ओके, यू आर यूजिंग सोलार, यू आर यूजिंग विंड एनर्जी. तो जितना भी कंपनी आप देखोगे बड़े बड़े, उनके सारे, सातारा जाओगे, चारकेवाड़ी में जाओगे तो यू विल फाइंड देयर ओन विंड मिल्स ओवर देयर. ठीक है,
क्यों लगा रहे? बिकॉज दे आर सेविंग. ओके, क्योंकि तुम उनकी कॉस्ट बढ़ गई तो उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, और प्रॉफिट कम हो रहा है, इनकम टैक्स कम हो रहा है, एंड इन अ वे दे आर हेल्पिंग द नेचर ऑल्सो. क्लियर? ओके. Then comes the oil wells. So there it is 15%. Okay, in general plant and machinery 15%, and all intangible assets acquired after 31/3/98. Okay, means 99 ईयर के बाद जितने भी एसेट्स आएंगे, 99 ईयर के बाद जितने भी एसेट आएंगे, intangible assets, their rate is, amortization rate is 25%. Clear? I am not using purposefully word depreciation rate. I am saying amortization rate is 25%. Because, okay, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ amortization? हाँ, because I am professional guy, so I will not say amortization in case of intangible asset. No, in case of tangible assets. Intangible के लिए I will purposefully use word amortization. Clear? Okay, chalo. So building includes roads, bridges, culverts, wells, excluding oil wells, tube wells. Okay. So plant does not include tea, bushes or livestock or buildings or furnitures and fittings. Okay. Patent, know-how, copyrights, trademarks, licenses, franchise and other business or commercial rights of similar. It does not include goodwill. It does not include goodwill. यहाँ पे intangible asset में goodwill is not included. Income Tax Act, goodwill is not included. Intangible asset. आपको मैंने इसलिए purposefully एक क्वेश्चन पूछा था, सबसे बड़ा intangible asset कौन सा है? Your answer was goodwill. Okay, but in case of Income Tax Act हमेशा आपको लिखना है एग्जाम में, goodwill is not included. ओके, और कोई भी प्रॉब्लम आता है जिसमें गुडविल दिया होगा उसको एक्सक्लूड कर. यस, कंपनी एक्ट अलाउड करता है, बट नॉट इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है, तो जब भी इनकम टैक्स एक्ट जैसा हमारा क्वेश्चन जो भी आपको एग्जाम में पूछेगा, है ना, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट, तो तभी आपको गुडविल एक्सक्लूड कर. ठीक है. तो ये सारे केसेस जो है ना, कंप्यूट डिप्रिशिएशन अंडर सेक्शन 32 फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 इन द फॉलोइंग केसेस. ओके, सो ये सारे क्वेश्चन आपको रिलेवेंट है. क्यों रिलेवेंट है बताता हूँ. जो रेजिम चल रहे हैं हमारी, कौन सी रेजिम? न्यू रेजिम, ओल्ड रेजिम. ओके, अभी दोनों में ये कॉमन चीज़ है. ओके, प्रोफेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको. इनकम रहा, हाउस प्रॉपर्टी में फर्क कहाँ पड़ रहा है? सैलरी में. ओके, तो ये प्रॉब्लम जो है ये आपको आने ही वाले हैं एग्जाम में, और आपको ये अटेम्प्ट करने हैं. क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, कंप्यूट डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन, लेकिन मेरे पास आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, यू नो दैट. ओके, आई हैड प्लान कि आपको कैसा पढ़ाना है. मेरे को हर दिन आपको एक एक सब्जेक्ट क्लियर करके जाना है. ओके, क्योंकि मेरे पास कम टाइम है, और मेरे पास नहीं, हमारे पास बहुत कम टाइम है. ओके, तो मैं ये प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ के जाता हूँ कि आपको ये घर पे करना है. और जिधर जिधर आपको अभी भी टाइम है कि जिधर आपको कुछ डाउट्स है ना, कम टू मी, पूछो. ओके, आई एम अवेलेबल ऑन ग्रुप ऑल्सो. कुछ भी डालो ग्रुप पे, आई विल आंसर. ठीक है, डू इट, बट डू इट. Okay, next thing is the additional depreciation under section 32(1) 2A, available only in old regime. Okay, ओके, सो ओल्ड रेजिम में अभी
न्यू रिजिम में निकाल दिया गया है, ओके, बट इट वाज देयर इन ओल्ड रिजिम, दैट इज कॉल्ड एडिशनल डिप्रिसिएशन. अभी एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या बताता हूँ. एडिशनल डिप्रिसिएशन इज अप्लीकेबल ऑन ऑल assessee engage in the business of manufacture or production of any article or thing or in the business of generation, transmission or distribution of power. तो उसको गवर्नमेंट ने दिया था additional depreciation. Okay, so this was a favor given to them. Why? Because they were in the business of generation, transmission or distribution of power. अपने महाराष्ट्र में कौन सी कंपनी है ये, क्या नाम है इसका? महाजेनको. Have you heard the name Mahagenco? नहीं? MSEB? Okay, MSEB was the old name. Maharashtra State Electricity Board. Okay, MSEB. This was the state governed company. Okay, अभी इन्होंने क्या किया? MSEB को उन्होंने तोड़ दिया under 3 companies. Correct? One is for generation. ओके, जनरेशन का नाम है महाजेनको, महाराष्ट्र जनरेशन कंपनी. ओके, महाजेनको. हैव यू हर्ड दिस नेम? नहीं. जितने भी आपके प्लांट है, ओके, पावर जनरेशन, कोराडी, देन कड़वा, देन पुणे के पास कौन से नहीं पता मुझे, चंद्रपुर, देन बल्लार शाह, सो ऑल दोज प्लांट्स. ओके, there will be thermal plants, there will be hydral plants, hydral koina, okay, hydral koina. So all generation, those who are in generation of electricity, so they are reporting to, there is a one entity called Mahagenco, उनको क्लब करके this entity is Mahagenco. ओके, दूसरा कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो आपके घर में पावर आता है और बिल डाल के जाता है ना, that company is MSEDCL. ये पता होगी आपको. इसका नाम क्या है? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, MSC. ओके, हाँ, इसका बिल आता है इसलिए पता है. और एक कंपनी है, ओके, सो दैट इज फॉर ट्रांसमिशन. क्या करते हैं, जैसा जनरेशन होने के बाद उसको स्टेप डाउन कर देते, उसका वोल्टेज डाउन कर देते और उसको ट्रांसमिट करते. जैसा चंद्रपुर का जो थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ से मेरे को मुंबई तक लेके जाना है, कड़वा तक लेके जाना है. ओके, तो कड़वा तक लेके जाने के लिए मैं उसको पहले स्टेप डाउन कर देता हूँ और ट्रांसमिट करता हूँ. ओके, बस बार से. तो बस बार सीधा कड़वा में रिपोर्ट करेगा, वहाँ पे मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दूंगा, तो वो कलेक्ट करेगा और उसको स्टेप अप कर देगा. हो गया. सो दैट इज द ट्रांसमिशन. कर रहे? करेक्ट. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ठीक है. और आपके पास जो लाइट आता है ना, दैट ऑल्सो हम क्या करते हैं, उसको स्टेप डाउन करके भेजते हैं. ओके, सो देयर इज वन ट्रांसफार्मर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप आपके घर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. ओके, फर्दर उसको थोड़ा अपग्रेड करके, यानी अप करके भेज देता है घर. क्लियर? सो दैट कंपनीज नेम आई एम नॉट रिमेंबरिंग अभी इमीडिएटली, क्योंकि वो आप जैसे आपके घर में बिल आता है उसको MSEDCL पता है, वैसे मैं भूल गया उसका नाम. ओके, क्योंकि वो कभी दिखती नहीं है ना. हाँ, मैकेंसीज. ओके, ओके, सो ये सारे जो थे, यानी इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उनको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल रहा था. आज भी वो ले सकते हैं अंडर ओल्ड रिजिम. ओके, जितने भी शुगर इंडस्ट्रीज थे जो को जनरेशन प्लांट ओन करते हैं, ओके, दे कैन गो फॉर एडिशनल डिप्रिसिएशन. दे कैन गो फॉर एडिशनल डिप्रिसिएशन. ओके, बताता हूँ. देखो, एडिशनल डिप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है.
The rate of additional depreciation is 20% of actual cost of such a plant or machinery. अभी आप क्या करते हो, 15% लेते हो जनरल प्लांट एंड मशीनरी में, एडिशनल में हम क्या करते हैं 20% ले लेते हैं. समझ गए, प्लांट एंड मशीनरी के. So where if the asset is acquired and put to use for less than 180 days, then additional depreciation is at 10%. Why? Let me tell you. जो भी सीजनल बिजनेस है जैसा शुगर इंडस्ट्री चलती कितने दिन है, 180 डेज, हाफ ईयर. ओके, तो यहाँ पे रेट कितना है 20%. ओके, उसका को जनरेशन चलता है कितना, आधा ही चल रहे हैं आधे ईयर के लिए. ओके, क्योंकि जब भी बगॅस होगा, ओके, जैसा गाळप चालू होईल, गाळप चालू झालं तर मला बगॅस मिळेल, बगॅस मिळाला तर मी माझे बॉयलर चालू करेल. ओके, आणि जनरेशन करेल. तर इथे मी काय करतो 20%चा हाफ म्हणजे किती झालं 10%. सो दॅट इज द रेट कन्सिडर. ओके, एक्चुअली जैसा अलग सिनेरियो रहता. ओके, तो 15% इज द नॉर्मल डिप्रिसिएशन, उसका हाफ 7.5% मेरे को लेने. तो ये 2.5% जो है दैट इज द एडिशनल डिप्रिसिएशन आई गेट, एडिशनल डिप्रिसिएशन आई गेट. ओके, so where if asset is acquired put to use for less than 180 days, then additional depreciation that is 10%, that is 50% of 20% of actual cash shall be allowed in that previous year, and a deduction for the balance 10% shall be allowed in the immediately succeeding previous year. Okay. और सीजनल का समझो सिनेरियो नहीं है, जनरल सिनेरियो हमारे जैसा. ओके, इट इज वर्किंग फॉर टोटल 360 days. दैट कंपनी इज वर्किंग फॉर 360 days. सो हियर आई मेक अ 2 schedules. ओके, एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर 30th September एंड एसेट्स एक्वायर्ड आफ्टर September, आफ्टर September 30th September. ओके, क्यों ऐसा ले रहा हूँ 180 days 180 days? Because I am allowed to take only 50% of depreciation which is acquired after September. Clear? Because I am using it for 180 days, half year के लिए. Okay. आपको पता होगा ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जनरली एसेट्स अगर खरीदना है ना, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, फेब्रुआरी में खरीद लो और अगस्त में खरीद लो, अगस्त में खरीद लो या सितंबर में कुछ दिन पहले खरीद लो. क्यों है ना, तुम कुछ दिन के लिए यूज करो उसको एंड यू अवेल फुल चाहे फुल डिप्रिसिएशन. तो ये सारा चीज कौन बता सकता है, कंपनी को कौन बता सकता है? हाँ, सीए में प्रोफेशनल पर्सन कैन टेल ऑल दिस थिंग्स कि ऐसा करो इतना पैसा बचेगा. ओके, now here illustration number 67. so they are given you date of acquisition. ओके, तो आपको पता है 180 डेज बोले तो क्या 31st के बाद September 30th September के बाद जितना भी आता है दैट इज 180 days, लेस देन 180 days, मोर देन 180. तो आपको ये निकालने के लिए बोला उसने एडिशनल डिप्रिसिएशन. Slum sale, do you understand slum sale means what? Slum sale, anyone? नहीं पता. ओके, जब भी एसेट्स आपको निकालने हैं, ओके, सो इफ यू विल चेक द फिक्स एसेट शेड्यूल, देयर आर 2 columns, addition of assets. Okay, before there are, for additions there are 2 columns. Okay, and then one more column is there, that is the removal of assets.
ओके तो उतना ब्लॉक आपको उस समय माइनस करना पड़ता है. जैसा प्लांट एंड मशीनरी में जितने भी रिमूवल हो गए दैट यू रिड्यूस ओके. तो उसके भी दो चलते हैं फिर बिफोर सब नहीं उसको नहीं है शायद उसको नहीं है. ओके सो सो दैट इज कॉल्ड एज लम सेल. तो इसमें क्या करते हैं हम कि ट्रांसफर्स ऑफ अंडरटेकिंग्स फॉर ए लमसम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग वैल्यूज टू द इंडिविजुअल एसेट्स फॉर सच अंडरटेकिंग्स. ओके सो जब भी सेल होता है स्लम सेल्स तो उसमें सारी चीज़ें होगी. प्लांट एंड मशीनरी का भी पार्ट रहेगा विच हैज़ डिप्रिशिएशन रेट एज 15%. फर्नीचर एंड फिक्सचर का भी होगा इलेक्ट्रिकल एंड उसका रेट अलग है 10% है ना. तो इसके लिए हम WDV ऑफ द ब्लॉक एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, एड परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, then less sale consideration for assets sold to the maximum of MNO. Now you will ask me what is MNO? What is MNO? Hello. Do you understand these two methods are there, okay, for depreciation? One method is called WDV. WDV. हे रिचार्जेबल आहे का सेल्स? हां त्यामुळे परवडत असेल नाहीतर मुश्किल आहे यार. Do you understand FAR? What is FAR?
This is called a fixed asset register. Who maintain this? FAR. In any organizations, okay, who maintains FAR? किसके custody में होता है ये? Which department? Finance. Very good. Finance department, they have FAR. Okay, FAR में क्या क्या होता है? Registered है ये. Okay, so how they maintain this register? Fixed asset. क्या क्या चीज़ इसमें डाला जाता है? कोई भी चीज़ regarding plant and machinery or any assets, building, okay, when it is put to use, when it is purchased, acquisition cost. So acquisition cost includes everything. Okay, उसका basic price क्या था, taxation कितना लगा, okay, उसके बाद उसको लाने को कितना टाइम, कितना खर्चा आया, जैसा ट्रांसपोर्टेशन, okay, if it is imported one तो custom duty कितना पे किया है, okay, so all inclusive that becomes a acquisition cost. And then put to use date, when we make it put to use, okay, and then उसका book value by charging a WDV and all, okay. So it includes a technical specification also कि क्या क्या चीज़ है उसमें, जैसे पैकिंग लिस्ट में लिखा होता है ना कि ये डब्बे के अंदर क्या क्या लिखा है, वैसा हर एसेट में जो भी कुछ नया चीज़ ऐड होती है तो मेन एसेट एंड विद दैट what are the corresponding assets under that. So that is inclusive in FAR, and this is a very critical document. Every accountant he should maintain, means their finance department they should maintain it FAR, okay, maintain this FAR, okay, vigorously, barabar, okay, because basically you are going to charge depreciation, okay, on the basis of this FAR. You are going to remove machineries, okay. बहुत बार mistake क्या करते हैं लोग, you understand captive, बहुत बार captive machinery बनती है कंपनी में, okay, and that is not included in FAR. वहाँ accountant मार्क आ जाता है because of communication gap, क्योंकि production वाला बताता ही नहीं उसको कि ये बनाया है हमने, and it is capital, because जो भी asset है it has to be capitalized. तो जब भी आप finance department they should work in coordination with purchase department, sorry not purchase, with production department, क्योंकि production वाला हरदम कुछ ना कुछ नया चीज़ करते रहता है, okay, but it never get capitalized क्योंकि उनको पता नहीं है, okay, basically they don't have any concern for your balance sheets or your P&L, उनको क्या लेना देना है, okay. So jigs and fixtures, this is the main area, they manufacture it on based on their suitability, okay, jigs, manufacturers, so ये चीज़ें capitalize होती नहीं है, वो होनी चाहिए कंपनी में, okay. Yeah, you were asking something. मोठ्याने बोल ना, मग ऐकू नाही येत. हां 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 नहीं, we call it as a trial runs, okay, and after see how it happens. सबसे पहले क्या होता है, design, we do the design, okay, so according to design we manufacture asset, okay, so then asset is brought to company, okay, then with the help of foundations we install it properly and then we take a trial production runs, okay, and once we are happy with trial production runs we capitalize it. मग तो आपण कमिशनिंग करून टाकतो, वी कॉल इट ॲज अ कमिशनिंग, आणि ज्या दिवशी कमिशनिंग होईल त्या दिवशीची पुट टू यूज डेट टाकायची. ट्रायल रन्स
हाँ, yes, that becomes the part of acquisition value. Clear? Okay. सिर्फ ये याद रखना, ग्रांट और सब्सिडीज विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. जितने भी कोई ग्रांट मिलते हैं आपको, ओके, सब्सिडी मिलता है, so that you have to remove because it's not the part of actual acquisition cost. तो acquisition cost को आपको कम करना पड़ेगा. ओके, देन इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन अगेंस्ट जीएसटी, तो उससे भी वो भी रिड्यूस कर देने का. ओके, बिकॉज दिस शुड बी ए साइंटिफिकली प्रूवन, एक्यूरेट, fair enough, okay, true and fair picture, so that's why you have to reduce it. ये पढ़ लेना सारा. Then I will teach you this thing, that is taxation of foreign exchange fluctuations. Okay, if you are having a SAP, SAP में एक लेजर हम बना देते हैं. ओके, तो जो भी लॉस और गेन होगा बिकॉज ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, सो विल पुट ओवर देयर. ओके, so why? Because it has a effect on taxation also. Okay, many times what happen, any gain or loss being computed in accordance with ICDS. What is ICDS? बोलो. ICDS. एक मिनट, मैं इसका लॉन्ग फॉर्म भूल गया हो. ICDS फुल फॉर्म. Income computation and disclosure standards. Income computation and disclosure standards. Okay, so arising on account of any change in foreign exchange rates shall be treated as income or loss. Okay, so such a gain or loss shall arise in respect of all foreign currency transactions, including those related to monetary items, non-monetary items, translation of financial statements of foreign operation, forward exchange contract or foreign currency transactions. Okay, this ICDS जब भी हम बैलेंस, हाँ क्या बोला? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है, वेरी गुड. ओके, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बोले तो जैसा समझो
फॉरेन में मुझे बेचना है, ओके, सो दैट टाइम सेल इज बुक्ड, ओके, फॉर अ September, okay, so I am preparing that atom, okay, since the month of let's say April, okay, और 6 महीने के बाद अप्रैल से सितंबर, हाँ 6 महीना ही होएगा ना, सो अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सो वॉट एवर नाउ दैट इज बुक्ड फॉर, मेरे को जो ऑर्डर दिया गया है, ओके, लेट्स से फॉर अ सर्टन $, ओके, सो उसका जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है, नाउ सितंबर में कुछ और होगा एक्सचेंज रेट, ओके, सो दैट टाइम आई विल मेक अ सेल, करेक्ट, तो तभी रियलाइजेशन जो होगा वो कुछ अलग होगा, मेरे को एडवांस जो मिला है उसका जो ये था वो अलग होगा, तो ये जो उसमें का जो डिफरेंस लगता है ना, तो दैट आल्सो गोज इन दिस लेजर, ओके, दैट इज द gain or loss on foreign exchange. Clear? That is a forward contract or exchange contract, okay. This ICDS, let me tell you, ICDS में inventory valuation also matters. Why inventory valuation matters? Because income computation, ठीक है, income computation, so income computation में आपके पास आप क्या करते हो, P&L में opening stock, okay, ये साइड में दिखाते हो, okay, closing stock another side, okay, so उसमें भी अगर इन्वेंट्री कुछ रॉ मटेरियल आप बाय करके लाते हो बाहर से, सो दैट फॉरेन एक्सचेंज थिंग्स प्लेज अ रोल ओवर देयर, ओके, उसका वैल्यूएशन जो है, एंड बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन रेट, ट्रांसलेशन बोले तो एक्सचेंज रेट्स, ओके, इट चेंजेस, वैल्यू चेंजेस, ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू शो क्लोजिंग स्टॉक, ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक आपने अभी ओपनिंग स्टॉक में भी वो पड़ा हुआ है, यू हैव नॉट यूज दैट आइटम, ओके, लेकिन तब रेट अलग था, ओके, तो उसके कैलकुलेशन में भी वो है विथ डिफरेंट रेट, और आज के कैलकुलेशन में भी है विथ डिफरेंट रेट, ओके, सो अगेन दैट ICDS थिंग विल कम ओवर देयर, क्लियर? Then unabsorbed depreciation. What is this unabsorbed depreciation? Unabsorbed बोले तो क्या? Unabsorbed depreciation means which cannot be fully deductible from the profits and gains of the current year of business or professions due to insufficient profit. Okay, because ultimately you should have a profit. Okay, because of MAT. MAT, you understand? MAT? सुना है क्या ये word MAT? नहीं? That is called a minimum alternative tax. MAT is minimum alternative tax. ओके, गवर्नमेंट क्या बोलता है, तुम धंधा कर रहा ना, तो ऐसा नहीं ना कि एवरी टाइम यू शुड डू इन लॉस. ओके, हमको तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, एंड हाउ आई विल गेट इफ यू हैव अ सर्टेन प्रॉफिट. ओके, सो यू शुड हैव अ प्रॉफिट. ओके, लेकिन आप बोलोगे यार मेरा डिप्रिसिएशन अगर मैं डालता हूं तो मैं लॉस में चला जाता हूं. गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है ना, वो तो नोशनल है, तू डाली मत. तो जो नहीं डालेगा वो, दैट इज कॉल्ड अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन. क्लियर?
that is called unabsorbed depreciation. So extra depreciation, so that can be charged in next year. Okay, that can be charged in next year. Okay, why? Because it remain unabsorbed. It remain unabsorbed. Yeah, please. हाँ. नहीं, क्या होगा, अमाउंट होगी आपके पास कि मेरा एक्चुअल डिप्रिसिएशन इतना है, which is the fair depreciation, but I have to show depreciation this much. So that difference that you can carry forward blockwise. Okay, and there are certain heads. The unabsorbed depreciation can be deducted from income under any other head except with casual income and salaries of the same assessment. समझ गए? सिर्फ ये हेड छोड़ के आप कर सकते हो उसको. ओके, and if depreciation still remains unabsorbed, it can be carried forward for indefinite period and can be set off against any income except with casual income and salaries of the assets. You understand amalgamation, demerger or succession? क्या है ये? Amalgamation is what? Mixing. Merge, we call it as a merger. What is demerger? Exact reverse of merger. Okay, amalgamation का exact reverse is demerger. And succession? Succession is what? Yes, that is the takeover. Okay, very good. So merger, demerger or takeover. Okay, so there are cases like amalgamation में depreciation under section 32 shall be apportioned between amalgamating company and the amalgamated company, right? Okay, then it will be in case of demerger, the demerged company and the resulting company. Okay, and the predecessor and the successor in the case of succession in the ratio of number of days for which the asset was used by them. Okay, in the ratio of number of days for which assets are used by them. Okay, so then there are special deduction for assessee engaged in tea, coffee or rubber growing and manufacturing business. Okay, this comes under section 33AB and rule 5C. Rule 5C available only under the old regime, अभी नहीं है. Okay, but it was available only under the old regime. अभी नया tax आया हुआ है. Okay, so not for this year, it is applicable for a next year, यानी 27-28. Okay, so that time these things won't be there in your syllabus. So your book अभी कितना 500-600 pages का book है, 600 pages का, that will become a book of 300 pages. बहुत सारा चीज़ चला जाएगा उसमें से. Okay. सो यू हैव टू, जैसा अभी ये डिडक्शन आपको मिलता है अगर आप नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे कोई डिपॉजिट रखोगे इन एन अकाउंट मेंटेन बाय हिम इन अकॉर्डेंस विथ और फॉर पर्पस स्पेसिफाइड इन द स्कीम अप्रूव्ड बाय टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड. ओके, तो ये सारे जो बिजनेस है, कौन से, टी, कॉफी, रबर. ओके, ये हमने एक बार और डिस्कस किया था. कब डिस्कस? एग्रीकल्चर. वेरी गुड, एग्रीकल्चर करेक्ट. क्या क्या था वो? टी के लिए 40%, राइट? 40 and 60. ओके, कॉफी 75. हाँ,
70 and 30, right? Okay, right, good. 60 for 40 and 60 for T, good. Okay, and also special deduction is given to these businesses if they will deposit certain amount with NABARD in an account maintained by him in accordance with or purpose specified in the scheme approved by tea board, coffee board or rubber board. An account in accordance with and for the purpose specified in scheme approved by the tea board, coffee board, rubber board, as the case may be. Time of deposit, the amount must be deposited within 6 months from the end of the previous year or before the due date of furnishing the return of income, whichever is earlier. Okay, audit is required in form 3AC. Now the case is that calculation of taxable income, okay. So nature of business पे वो depend है, जैसा टी growing के लिए कितना 40% of income will be taxable income, like income from business minus deduction under section 33A. Then coffee growing 25% or 40% income from business less deduction, okay. Then rubber growing 35% of income from business minus deduction under section. Then this is also available under only old regime, that is a site restoration fund. Okay, तो जो भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बिजनेस में है उनको ये एप्लीकेबल है, site restoration fund. Okay, so all assessees engage in the business of prospecting from petroleum or natural gas, extraction or production of petroleum or natural gas or both in India. Okay, so all CGD business, CGD stands for City Gas Distribution Business. आपके इधर कौन है पुणे में? 2 parties are there. एक का नाम है टोरेंट गैस, ओके, तो उनको कौन सा लाइसेंस मिला है? पुणे रूरल. ओके, तो जितना भी रूरल में जाओगे आप, जैसे बारामती चले जाओ या फिर सासवड़, जेजूरी, फिर बारामती, फिर ये एरिया अपना इंदापुर जाइए, फिर सो ऑल CGD बिजनेस, सो दैट इज गवर्न बाय टोरेंट पावर. ओके, और जैसे पुणे सिटी के लिए कौन है? पुणे एंड PCMC, नॉट महानगर, MNGL. ओके, तो CGD बिजनेस MNGL फॉर पुणे. ओके, देन टोरेंट गैस फॉर पुणे रूरल. ठीक है, शिरवड़ में जाओगे, शिरवड़ इन सातारा डिस्ट्रिक्ट क्या, उसके पहले अगर जाओगे ना खेड़ शिवापुर वगैरह वो एरिया में. ओके, सो टोरेंट गैस, यू विल फाइंड टोरेंट गैस over there. ठीक है, so all assessees engage in the business of prospecting for petroleum or natural gas. Okay, so they are CGD वाले सारे plus GAIL, Gas Authority of India Limited. Okay, and extraction or production of petroleum or natural gas. So कौन कर रहा है इंडिया में? Which company is there? एक ही कंपनी, ONGC. Very good, ONGC. Okay, so उनको मिलता है ये site restoration fund. Condition to be satisfied, the central government has entered into an agreement with the assessee for such a business. Deposit of amount, so with the SBI, okay, or in account herein referred as a site restoration account opened by the assessee in accordance with or the purpose for the purpose specified in the scheme approved by the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Okay, Ministry of Petroleum and Natural Gas. Okay, so who is heading this ministry? PNG Ministry, Petroleum and Natural Gas.
कौन है? नहीं पता? ओके, हिज नेम इज मिस्टर वैष्णव. ओके. Then scientific research also. The scientific research means any activity for the extensions of knowledge in the field of natural or applied sciences, including agriculture, animal husbandries or fisheries. Okay. So they are categorized as in-house research or research through outside institutions. Okay, so research done by the assessee himself in connection with the business or any sum paid to outside agency engage in the scientific research. Okay, so Institute of Cost Accountants of India, ICAI. Okay, ICMAI. Okay, so we have also one wing which is doing a research. Okay, and that is called MARF. दैट विंग इज कॉल्ड मार्फ. तो जो भी मार्फ पे जितना भी खर्चा होता है दैट इज एग्जेम्प्टेड. क्लियर? दिस स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन. ठीक है? क्लियर? तो जो भी खर्चा मार्फ पे होता है. ओके, एंड मार्फ इज डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. ओके, विथ टी बोर्ड्स, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, हॉस्पिटल्स, सारे लोगों के साथ दे आर डूइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स. तो आप इन हाउस एजेंसी, दिस इज आवर इन हाउस. मार्फ इज आवर इन हाउस and you can do with the help of outside agencies also. वो भी खर्चा आपको माफ हो जाएगा. So I think we should stop over here, है ना? ज़्यादा टाइम हो गया, 8:36. ये पेज नंबर याद रखना 230. ओके, ये यहाँ से कल चालू कर देंगे. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेसेस. ओके, सो दिस आई विल एक्सप्लेन यू 230 पे का. चलो, थैंक्स. सॉरी फॉर लेट, ट्रैफिक में फंस गया था. अच्छा फंस गया था लेकिन.